few things, क्या चीज़ों को अपने दिमाग में रखना चाहिए selecting the right franchisee, as well as Flaunt Basket के बारे में कि why why Flaunt Basket is one of the best franchises today. To start with the whole discussion, uh, सो ये नॉर्मल ये जो है ये सब पॉइंट्स है बेसिकली जो आपके दिमाग में आप रखते हो फॉर डिसाइडिंग द राइट फ्रेंचाइजी। मान के चलिए आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आज की डेट में मार्केट में। तो ये थोड़े पैरामीटर्स है जिसको आप डिसाइड करते हो फॉर अ राइट फ्रेंचाइजी। जैसे कि आपका इंटरेस्ट लेवल उस बिजनेस में कितना है। दूसरा हो गया आपका स्कोप, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या स्कोप है ऑन अ लॉन्गर लेवल। तीसरा हो गया what kind of support you the company gives you। तीसरा है सॉरी टू इंटरप्ट जय जी, थोड़ा सा वॉइस आप प्लीज इंक्रीज कर लीजिए, थैंक यू। sure is my voice audible now? यस यस, इट्स नाउ परफेक्ट, प्लीज कंटिन्यू। Okay, perfect. So see, basically what I have laid down are the kind of points जो कोई भी इन्वेस्टर अपने दिमाग में रखना चाहिए while deciding the right franchisee। जैसे कि पहले हो गया इंटरेस्ट का। तो जो इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके कितना है। दूसरा हो गया स्कोप। स्कोप बेसिकली उस प्रोडक्ट का क्या स्कोप है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तीसरा, जो भी कंपनी जिसके साथ आप जुड़े हुए हो उसका क्या सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ योर फंक्शनैलिटी, या जब आप लॉन्च करते हो या इनिशियल लेवल सेटअप एंड ऑल दोस थिंग्स। Next is how authentic and genuine is the product. Again, you have a point like inventory shelf life, जो कई ऐसे होता है जो एफएमसीजी में जहाँ पे आपका शेल्फ लाइफ कम है, तो जहाँ शेल्फ लाइफ कम होता है तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है डिसाइड करने के लिए सेलेक्टिंग द राइट फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट इज योर मार्जिन्स इन्वॉल्व इन इट। इज इट लाइक सर्वाइवल मार्जिन जैसे कि 10-15% आपका छूटता है, या समथिंग लाइक ऑन लॉन्गर लेवल विच विल हेल्प यू टू ग्रो ऑन अ बिगर लेवल। एंड द डिटेल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। So basically, all these points will be covered in my discussion in detail pertaining to my industry, that is Flaunt Basket and the silver jewelry as a whole. अब जब आप ऑब्वियसली डिसाइड कर चुके हो कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि किस प्रोडक्ट में जाए। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका स्कोप बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। तो हियर अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिल्वर ज्वेलरी। टुडे सिल्वर ज्वेलरी इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि अगर हम आज के डेट में जो कंज्यूमर बिहेवियर देखते हैं एट द एज ऑफ अबाउट 18 to 35, अगर आप उनका बिहेवियर देखोगे तो दे गेट बोर्ड वेयरिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, और दे नॉर्मली प्रेफर चेंजिंग। और आज के डेट पे गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी काफी लोगों को एलर्जी होने लगा है। मैं ये और एक बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ विद गिविंग एन एग्जांपल। लेट्स से देयर इज अ girl by name Kangana who's about 25-26 years. She is working in a company with a salary of about 30,000 rupees. तो आज के डेट पे obviously she changes her jewelry whether it's going to the office, coming back, going to the party regularly, she'll be obviously changing क्योंकि वही चीज वो बार बार पहनेगी भी नहीं। और आज के डेट पे अगर वो एक स्टड भी लेने जाएगी, स्टड ऑफ गोल्ड विल be approximately 3 grams and would cost about 70,000 rupees today. So that means उसका कम से कम 70% of a salary, so 55-60% of the salary will go just in one stud, जो प्रैक्टिकली आज के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सिल्वर ज्वेलरी, क्योंकि आर्टिफिशियल काफी लोगों को एलर्जी होने लगा है। एंड सिल्वर ज्वेलरी द डिजाइन आर मच नीटर, मच बेटर फिनिश, एंड यू गेट अ इन टर्म्स ऑफ स्टोन फिनिशिंग और प्राइस वाइज भी काफी इफेक्टिव है। दैट इज द वन पार्ट ऑफ द स्कोप। द सेकेंड पार्ट ऑफ स्कोप ये भी है कि सिल्वर ज्वेलरी इज ऑल्सो राइजिंग एज अ ग्रेट गिफ्टिंग ऑप्शन। अगर आप मान के चलिए आपको किसी को गिफ्ट देना है, एंड what to gift, maybe a bouquet which might get spoiled in a day, or maybe a showpiece जो आज के डेट में हर किसी के घर पे ऑलरेडी इतने शोपीसेस पड़े रहते हैं कि दे जस्ट चेंज द नेम एंड दे कैन गिव इट टू समबडी एल्स। तो सिल्वर ज्वेलरी इज समथिंग व्हिच इज राइजिंग एज अ ग्रेट गिफ्टिंग ऑप्शन बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वन, जब भी कोई प्रेजेंटर है जिसको आप दे रहे हो, वो जब भी पहनता है वो ऑब्वियसली याद करता है कि इसने मुझे एक गिफ्ट दिया था। दूसरा, वेदर इट्स हिंदू, मुस्लिम और क्रिस्टियनिटी, इट्स नॉट वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस मेटल। तो इट्स अ ग्रेट गिफ्टिंग ऑप्शन ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द क्लासीनेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो इट्स अ वेरी बिग मार्केट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इट्स अ ज्वेलरी मार्केट एज वेल एज अ गिफ्टिंग मार्केट एज अ होल। तो इतना बड़ा स्कोप है इस इंडस्ट्री का। बेसिकली अगर हम हमारी स्टोरी के बारे में बात करें,
So basically, as a company, we started long back in about 2015. Initially, we were purely to B2B. Then we started a retail and online unit by about 2017. 2018 में हमारा फर्स्ट स्टोर था विच वाज मोर ऑफ अ टेस्टर स्टोर. अगर कोई बैंगलोर से फेमिलियर है तो आर फर्स्ट स्टोर वाज एट जीटी वर्ल्ड मॉल. अब जीटी वर्ल्ड मॉल एक ऐसा ऐसा मॉल है विच इज अ टोटली मिड लेवल मॉल, जहाँ पे जो क्राउड और जो क्राउड है इट इज प्योरली द 20 to 25,000 सैलरी टेकर्स नॉर्मली द टिपिकल मिडिल क्लास जिसकी जिनके दिमाग में ये होता है कि गोल्ड का रीसेल वैल्यू है, मैं सिल्वर में क्यों इन्वेस्ट करूं एंड थिंग्स लाइक दैट. मतलब उनका जो साइकोलॉजी है ऑलमोस्ट उस टाइप का साइकोलॉजी है. एंड वी हैड टू पेनिट्रेट दिस मार्केट क्योंकि वो अपना मास मार्केट है. So we were very successful. After that, we launched our first franchisee, and then there was no turning back. So just we went on growing up. और आज के डेट में वेरी हैप्पी टू से दैट द काइंड ऑफ रेस्पॉन्स अगर हम हमारी फ्रेंचाइज का देखें तो वी हैव क्लोज टू अबाउट 92% कन्वर्शन रेट. दैट इज एवरी कस्टमर हु इज कमिंग इन 92% ऑफ द कस्टमर एंड अप बाइंग. और close to about 43% is our repeat customers if it comes to stores, and about 28% approximately in the malls basically, जो एक बहुत अच्छा फिगर होता है if you talk about the repeat customer rate. Now, in case if you take up the franchisee of us, what are the kind of supports you get? Basically, for us, it's not more like a franchise, it's more like a branch of ours. तो आपको जितने भी इनिशियल सपोर्ट चाहिए मान के चलिए कि जब आप स्टार्ट करते हो तो लोकेशन के लिए हेल्प करना, फिर आपके स्टोर को सेटअप करना, हायरिंग, ट्रेनिंग, सेल्स, ऑल दोज विल बी टेकन केयर ऑफ. सी कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो देयर आर अबाउट 4 रीजंस अगर बिजनेस ना चलने का. सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि आपका लोकेशन खराब हो. दूसरा हो सकता है जो प्रोडक्ट आप डील कर रहे हो वो सही नहीं है या वो इट्स नॉट अ गुड प्रोडक्ट. तीसरा हो सकता है कि आपकी सेल्स टीम जो है दे आर नॉट डूइंग जस्टिस फॉर द वर्क. और फोर्थ है आपका एड एंड ऑफर सेल सर्विस. अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो यस वी हैव अ चेकलिस्ट ऑफ अबाउट 20-25 पॉइंट्स व्हिच वी नॉर्मली कंसीडर फॉर सेलेक्टिंग अ राइट फ्रेंचाइजी. दूसरा है व्हेन इट कम्स टू दी प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट लाइन इतना वर्सेटाइल है क्योंकि हमको खुद को पता है कि हर एक महीने में ट्रेंड चेंज होता है, हर एक महीने में नए डिजाइन लॉन्च करने पड़ते हैं. तो हम यूज टू है. मान के चलिए आपकी जगह पे ये पर्टिकुलर डिजाइन नहीं चलते हैं तो आपके डिजाइन के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से नए डिजाइन डेवलप करके वी कैन हैव अ लॉन्च न्यू लॉन्चेस ऑन रेगुलर इंटरवल्स. तीसरा रहा सवाल ट्रेनिंग का. तो यस वी हेल्प यू इन ऑर्डर टू ट्रेन है हमारे रेगुलर जूम कॉल्स होते हैं, रेगुलर ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग्स होते हैं. हमारी टीम भी वहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स पे आती रहती है चेक वेदर जो हमारी सेल्स टीम है बराबर काम कर रही है नहीं कर रही है. नॉट ओनली दैट वी आल्सो हैव एक्सेस टू योर कैमरास दैट्स कंपल्सरी, जो हम भी रेगुलर चेक करते रहते हैं. Plus, we have ghost customer concept where one of our team members will come in as a ghost and as a customer and check कि आपकी टीम बराबर काम कर रही है नहीं कर रही है, things like that. बाकी रहा सवाल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का. तो एज अ टीम यस वी आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग. अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वी हैव क्लोज टू 25 to 26 celebrities who have already been promoting us on all our social platforms. अगर हम हमारी ब्रांडिंग की बात करें जो हमने जस्ट बात किया था, these are few of the celebs who are already associated with us. Few are very well known stars, few are mid level serial stars and things like that. We also participate in regular events and the outdoor activities on regular interval. This is something called as an influencers meet which we had at one of our store. तो इन्फ्लुएंसर्स मीट ये होता है कि बेसिकली जो वेल नोन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मान के चलो 8-10 लोग जिनके 2-3 लाख फॉलोअर्स होते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं. It's like a kind of a get together where they wear our jewelry, they post about us and things like that. तो ऐसे काफी एक्टिविटीज हम करते रहते हैं on a regular interval. These are the rough idea, rough photos of the product line. आपको और डिटेल में मिल जाएगा if you get into the website. That's website you can get into, or else you can go for an Instagram page that is Flaunt Basket _ silver jewelry. वहाँ पे आपको और better designs आपको मिल जाएंगे. We also do product customization. Now when I'm saying the product customization, अभी ये particular design है, this is again a design of one of the celebrities who actually wanted a kind of a design similar to this. तो एक sketch होता है, CAD होता है, then we develop the same thing for one of our clients. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आप हमारे फ्रेंचाइजी क्यों लेना चाहिए और हमारे बारे में क्या यूनिक है. सबसे पहली बात, वी हैव अ बेटर एनालिटिक्स एंड सोर्सिंग स्किल्स. दूसरा, हमारा जो डिजाइन मिक्स है इट इज इन द रेशियो 60-40, वेयर 60% हम लोग प्रोक्योर करते हैं फ्रॉम द फैक्ट्रीज अक्रॉस द ग्रुप जिसके पास हमारा एमओयू है, और 40% इज समथिंग जो हमारे खुद के डिजाइन है जो हम डेवलप करवाते हैं.
थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इन्वेंटरी रिस्क. अब जब मैं नो इन्वेंटरी रिस्क का मतलब ये बोलता हूँ कि इट डज नॉट मीन 100% नो इन्वेंटरी रिस्क. हाउ इट वर्क्स इज आपका जितना भी सेल होता है उसका 20% ऑफ स्टॉक जो नहीं बिक रहा है आप मुझे रिप्लेस कर सकते हो. यू कैन गो ऑन रिप्लेसिंग इट ऑन द रेगुलर इंटरवल. So you have a better safer side where 20% you can keep on changing up with whatever sales happen. So the new stock also keeps on coming in, plus whatever your old or desktops are, in case if it is the desktop, you're taking unsold stock, that you can get it replaced on a faster track. Basically, this is an omni-channel platform, so you can also start selling it on Instagram and Facebook and your own. But the condition is it has to be Flaunt Basket underscore the area for which you have been allotted. इसके दौरान आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ हाउ टू डू व्हाट टू डू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे सेल किया जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट. Right now, yes, we have a decent successful model and a financial proof is working. अगर हम बात करते हैं with our existing stores, how successful they are working and things like that in terms of our repeat rate, customer uh, sales ratio and things like that. And as I told you, we also have an opportunity to tweak ourselves and correct as we progress. तो ऐसे नहीं कि अगर मान के चलो अपना हमारा बर्गर किंग है, बर्गर बर्गर बिके या ना बिके, बर्गर ही बेचना है. तो इट इज समथिंग वेयर वी कैन ऑटोमेटिकली ट्वीक एज पर द ट्रेंड of the place basically. The kind of product pricing what we start is about 200 to 250 rupees is our starting price. That I'm talking about the small start or something like that, and goes on to about 15-20,000 depending on what kind of product mix you want to keep basically. और इसमें margin करीबन 35 to 50% बैठता है. At an average, in the end of the month, when you calculate, close to 40 to 43% would be your margin. Now, why 35 to 50 is, see, we have something which is a regular product line, which is available everywhere. For example, something like an Indian chain. अभी इंडियन चेन है कि नियर बाय ज्वेलर्स में ऑब्वियसली मिलता ही है द सिमिलर डिजाइन एंड द पैटर्न. तो एंड वी आल्सो नीड टू कीप बिकॉज एट द एंड ऑफ द स्टॉक बिकता है. तो दिस 35% जो लोअर मार्जिन है वो those kind of products है, so that if people compare the price also, they'll still end up buying easily because we are on par a little lesser than whatever other people are selling. So that is why that's a lower margin. 50-60% भी हमारे margin से products के. So at average it's 40 to 43%. Now we are few of the only companies who are also giving authentication card with a hologram on every product, where so that the customer who is buying is satisfied कि हाँ वो genuine product buy कर रहा है. And we also have a buyback policy that is जो भी whenever they want to give, let it be in the damaged state or whatever, जो भी उस दिन का चांदी का रेट रहेगा into 92% we buy back. These are few of the testimonials. These are few of the online testimonials in India as well as in abroad. The online testimonials of us. This is how our store looks. I can go in depth in terms of अलग-अलग stores कैसे दिखते हैं also. If required, this is the franchisee look, one of the franchisee look stores. Basically, when you're talking about the business model, we have two business models. One is a kiosk model and one is a store model. Kiosk model is restricted only and only for malls. जो malls के नीचे आप counters देखते हो उस type के model है, जहाँ पे आपका investment होगा 25 lakhs as a whole. 3 lakhs would be the franchisee fee. Interiors would be close to 5 lakhs. The kiosk cost normally. Kiosk again, if you can get it at a economical cost as per the company guidelines, आप अपने हिसाब से करवा सकते हो. That is not a problem. और आपको एक security deposit होगा off the stock which is 17 lakhs, जिसके against आपको stock मिलेगा. And you can go on as the sale happens, you can keep on refilling it, but you'll have to minimum maintain 17 lakh of stock. Now this is the second model of ours, which is a store model, where we need a minimum 500 square feet place, and franchisee fees is 5 lakhs, interior is 10 lakhs, and a security deposit is about 35 lakhs for the same, for which you get the stock. Basically, we work on our major focus would be purely on FOFO, that is franchisee owned, franchisee operated. We are also open for FOCO on case-to-case basis. If there's somebody who has a higher appetite of investment and who is ready to invest in strategic locations like airport or some very popular places as such. These are some of the current numbers. Basically, you're talking about stores. Basically, a store inside a mall normally breaks even the first month because it has a normal crowd flow. और जो नॉर्मल स्टोर फ्रेंचाइजीज होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं वो नॉर्मली थर्ड मंथ से दे कैन इजीली ब्रेक इवन. But again, what happens is the repeat customer rate is normally very high if it is a store outside compared to the mall, as per our experience. Thank you, and we are open for the questions.